Hello students, a warm welcome and a very good evening to each one of you. I welcome you all once again to another session here which is based on comprehension and cloze test. So फटाफट सभी लोग join कर लें and let me know so that I can start the session for you. We'll be discussing comprehension and cloze test in this particular session. Right, so good to see you. A few people have joined in. It seems सभी का स्वागत है सेशन में. मैं भी सेशन को शेयर कर देता हूँ. जो लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में आप भी अपने तरफ से शेयर कर दीजिए सेशन को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके. आई होप योर प्रेपरेशंस आर गोइंग ऑन वेल एंड यू डू नॉट हैव मच टाइम लेफ्ट. ओके, लास्ट मिनट प्रेपरेशंस में ही लगे होंगे उम्मीद करता हूँ. ओके जी, तो सभी का स्वागत है सेशन में. वी आर अबाउट टू डिस्कस क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंशन. नाउ कई लोगों को ये दिक्कत होती है कॉम्प्रिहेंशन में. अगेन लगता है कि सर कौन कॉम्प्रिहेंशन पढ़े और लंबा पैसेज पढ़ के आंसर दे. बट यू कैन नॉट बी लेथार्जिक, यू कैन नॉट बी इनडिफरेंट टू सच क्वेश्चंस बिकॉज ये क्वेश्चंस आपको कट ऑफ क्लियर करने में काफ़ी मदद करेंगे. उम्मीद करता हूँ आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें ठीक ठाक स्कोर कर रहे हो. एम फॉर एटलीस्ट 75 to 80 इन द इंग्लिश सेक्शन. तब जाके आप 70-65 के आसपास आते हो तो इजीली कट ऑफ क्लियर हो सकता है आपका. नॉट अ बिग डील. लेकिन उसको क्लियर करने के लिए इन प्रकार के क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट वगैरह वाले क्वेश्चंस करना बहुत बहुत ज़रूरी है. इसको आप मिस नहीं कर सकते. Now before I start, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे प्रैक्टिस सेट्स हैं, ओके, टेस्ट बुक पास, ओके, सो उसके लिए देर इज अ डिस्काउंट सेल गोइंग ऑन राइट नाउ. ओके, ईयरली टेस्ट बुक पास के लिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है 10% ऑफ. यू यूज दिस कोड जोश पास टू अवेल दिस डिस्काउंट. और ये डिस्काउंट 4 से 7 अप्रैल तक ही है. अभी लास्ट मिनट प्रेपरेशंस कर रहे हो तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाना चाहिए. ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि आप ब्रशअप कर सके हो अपने स्किल्स. जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़े हैं वो प्रैक्टिस से ही ब्रशअप होगा, याद रखना. सो दैट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो चलो बढ़ते हैं आज के इसमें. सबसे पहला क्लोज टेस्ट पैराग्राफ ये रहा. Here is the paragraph. Directions देखो क्या कह रहा है. It says each of the following sentences in this section has a blank space with 4 words or group of words given. Select whichever word or group of words you consider most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. So here is the cloze test, guys. मैंने आपको पहले भी बताया है. This cloze test was actually asked in one of the previous year's papers. उसी में से मैं लेके आया हूँ. तो क्लोज टेस्ट को करने के लिए आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि सबसे पहले इट्स ऑलवेज बेटर टू रीड द पैसेज वंस, गेट एन आइडिया एज टू व्हाट इज रिटन इन द पैसेज एंड देन यू गो अबाउट सॉल्विंग और सेलेक्टिंग द आंसर्स और करेक्ट आंसर्स. तो सबसे पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं. इट सेज द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री दिस ईयर इज अ ट्रिब्यूट टू द पावर ऑफ डैश. The laureates harnessed evolution and used it in the dash with amazing results. Francis H. Arnold, an American who was given 1/2 of the prize, used directed evolution to dash variants of naturally occurring enzymes that could be used to dash biofuels and pharmaceuticals. The other half went to George P. Smith, also of the US, and Sir Gregory P. Winter from the UK, who evolved antibodies to dash autoimmune diseases and even metastatic cancer through a process called phase display. So here's the paragraph. You get a fair idea as to what it talks about.
ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है ये आइडिया आपको आ जाता है। तो उसके बाद आप सेलेक्ट करते हो ऑप्शंस को। द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री दिस ईयर इज अट्रीब्यूट टू द पावर ऑफ डैश। यू हैव अ कीवर्ड ऑलरेडी गिवन इन द पैसेज, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? टू द पावर ऑफ व्हाट? एवोल्यूशन, डेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन और इनवोल्यूशन। 4 ऑप्शंस। कुछ लोगों ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, द करेक्ट आंसर इज इंडीड ए, पावर ऑफ एवोल्यूशन इज राइट, पावर ऑफ एवोल्यूशन। आगे देखो क्या कह रहा है। सेकंड ब्लैंक, ध्यान से पढ़िए एंड टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस वन। It says the Nobel Prize for Chemistry this year is attributed to the power of evolution. ये तो हुआ। The laureates harnessed evolution and used it in the dash with amazing results. Used it in the microscope, field, market और laboratory. 4 options. मीनिंग के हिसाब से, पैसेज के मीनिंग के हिसाब से क्या लगना चाहिए? Used it in the microscope, field, market और laboratory. They used it in the laboratory. Yes, I'm talking about these laureates, which are obviously these are scientists who are actually finding out something. So they harnessed evolution. उन्होंने प्रिजर्व किया एवोल्यूशन को एंड ही यूज्ड इट इन द लेबोरेटरी विथ अमेजिंग रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंट्स किया होगा तभी तो रिजल्ट्स आए होंगे। तो माइक्रोस्कोप नहीं हो सकता, फील्ड मार्केट नहीं हो सकता, लेबोरेटरी। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझिए। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस यू कैन इजीली गेट टू द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहां पे हो गया इन द लेबोरेटरी। आगे बढ़ते हैं, ब्लैंक नंबर 74। Used it in the laboratory with amazing results. Francis H. Arnold, an American who was given 1/2 of the prize, used directed evolution to dash variants of naturally occurring enzymes. To dash, inhibit, synthesize, hamper or hold back. क्या होना चाहिए बताओ? चारों के मीनिंग समझो तब आपका काम आसान होगा। इनमें इनहिबिट का मतलब टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और टू स्लो डाउन समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। कोई चीज हो रहा है उसको धीरे कर देना या उसको हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, दैट इज इनहिबिट। सिंथेसाइज मीन्स टू प्रोसेस। हैम्पर, इनहिबिट एक ही मीनिंग है। ओके, रोकना या स्लो कर देना। होल्ड बैक का भी वही मतलब है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? अगर एलिमिनेशन लगाओगे तो ए नहीं हो सकता, तो सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर इज बी, टू प्रोसेस। मीनिंग के हिसाब से भी समझ में आ रहा है। यू नीड अ पॉजिटिव वर्ड। दे यूज डायरेक्टेड इवोल्यूशन टू सिंथेसाइज वेरिएंट्स, which means they used evolution to synthesize or process variants of naturally occurring enzymes that could be used to dash biofuels. यहाँ तो B हो गया। अगला, constitute, sink, manufacture, resolve, that could be used। ओके, यहाँ पे तो आपने लिख दिया directed evolution to synthesize variants of naturally occurring enzymes that could be used to dash biofuels. Constitute, sink, manufacture, resolve. Constitute मतलब संग्रहित करना, सभी को एक जगह इकट्ठा करना। सिंक का मतलब डुबाना, मैन्युफैक्चर का मतलब क्रिएट करना और रिजॉल्व का मतलब एक प्रकार से प्रण लेना। यूजुअली रिवेंज के लिए भी यूज किया जा सकता है। टेक अ स्ट्रॉन्ग स्वेयर अबाउट समथिंग, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस लेना कि ये चीज करेंगे, दैट इज अ रिजॉल्व।
क्या होना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज इंडीड सी, वेरी गुड, मैन्युफैक्चर, मीनिंग के हिसाब से, यूज टू मैन्युफैक्चर बायोफ्यूल्स इन फार्मास्यूटिकल्स। आगे देखो क्या कह रहा है, द अदर हाफ वेंट टू जॉर्ज पी स्मिथ ऑल्सो ऑफ द यूएस एंड सर ग्रेगरी पी विंटर फ्रॉम द यूके हु इवॉल्व्ड एंटीबॉडीज to dash autoimmune diseases and even metastatic cancer through a process called phase display. Combat, support, observe और invite. Combat मतलब होता है fight, okay, attack. Support मतलब आप already जानते होगे. Observe मतलब ध्यान से देखना. Invite मतलब आमंत्रण करना. Invite. So क्या होना चाहिए? The correct answer should be indeed combat. Okay, A is absolutely right. Evolved antibodies to combat autoimmune diseases and even metastatic cancer through a process called phase display. Combat is absolutely right, which means to fight. So ये 5 ब्लैंक में कितने आंसर्स आपके सही हुए? गाइज बता दूं, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे. Okay, this was taken from one of the previous year's CDS papers. So you understand कि इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं होता. Once you read the passage in a flow and understand the main idea or thought given in it, it really becomes easy for you to select the correct answers. So please ensure that if you focus on understanding the passage first and then go about selecting the correct answers. That's very very important. Okay, समझना बहुत बहुत ज़रूरी है. So A is the answer to this one. आगे बढ़ते हैं. अगला पैसेज ये रहा. ध्यान से पढ़ो पहले पैसेज को. रीड द पैसेज एवरीवन केयरफुली एंड देन वील मूव ऑन टू द ऑप्शंस. पढ़ के बताना. Once you're through with the reading, we'll move on to the options, answers. पढ़ लिया सबने पैसेज? हैव यू रेड द पैसेज एवरीवन? Okay, pretty well. It says in the following passage, some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of alternatives given. Select the most appropriate option for each blank. Same चीज करना है. It says many parents greet their children's teenage years with needless dread. Dread का मतलब डर. While teens dash assault us with heavy metal music, dash outlandish clothes and spend all dash time with friends, such behavior dash adds up to full-scale revolt teenage dash. According to psychologist Lawrence Steinberg has been dash exaggerated. So blank number 1 में क्या आना चाहिए? Select the most appropriate option for blank number 1. Many parents greet their children's teenage years with needless dread, while teens dash assault us. Should assault us, may assault us, must or can. क्या होना चाहिए? The correct answer is B. Well done. कई लोगों ने already answer दे रखा था. While teens may assault us, हो सकता है टीनेज के बच्चे हमें असॉल्ट करें, परेशान करें. किस चीज़ को? हेवी मेटल म्यूजिक सुन के. डैश आउटलैंडिश क्लोथ्स, यहाँ तो बी हो गया. अगले ब्लैंक में क्या होगा बताओ? डैश आउटलैंडिश क्लोथ्स, पुट, शो, ड्रेस और फ्लॉन्ट.
ब्लैंक नंबर 2 का बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर। डैश आउटलैंडिश क्लोथ्स। पुट का मतलब रखना, शो का मतलब दिखाना, ड्रेस का मतलब पहनना, फ्लॉन्ट का मतलब दिखावा करना, शो ऑफ करना, डिस्प्ले करना, दैट इज फ्लॉन्ट। सो क्या होना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज इंडीड डी। While teens may assault us with heavy metal music, flaunt outlandish clothes, outlandish clothes पहन के दिखा सकते हैं, and spend, ओके यहाँ तो flaunt हो गया, हाँ में हो गया, ब्लैंक नंबर 3 पे आते हैं। Flaunt outlandish clothes and spend all dash time with friends. Easy one, blank number 3. Spend all their, very good. They may spend all their time with friends. Spend all their time with friends. Okay. Such behavior dash adds up to. Such behavior dash adds up to. क्या होना चाहिए बताइए? Okay, such behavior dash adds up to. बताओ. Okay, some people have already answered. I can see. Let's look at the answers here. The correct answer is blank number 4 का था ना? Okay, एक मिनट guys. Okay, the correct answer to this one is हमेशा तो नहीं होता है, तो infrequently, sporadically. B is absolutely right. The correct answer is B. Okay, outlandish clothes and spend their time with friends. Such behaviors sporadically adds up to full scale revolt. Okay, कभी कभी मतलब बहुत ही कम इंस्टेंसेस ऐसे होगा कि टीनेज फुल स्केल रिवोल्ट करने लगे, विरोध करने लगे, विद्रोह करने लगे. सो बी इज एब्सोल्युटली राइट. आगे बढ़ते हैं. स्पोरेडिकली एड्स अप टू फुल स्केल रिवोल्ट. टीनेज डैश रेवोल्यूशन, मेनिया, सबवर्जन, रिबेलियन. क्या होना चाहिए इसमें बताओ? विद्रोह को क्या करते कहते हैं? अगर इतना आपको पता है तो यू कैन आंसर दिस. Okay, rebellion is absolutely right. The correct answer is D for this one. Rebellion. जिसने भी rebellion कहा बिल्कुल सही थे. Well done. Full scale revolt, teenage rebellion. According to psychologist Lawrence Steinberg has been dash exaggerated. क्या होना चाहिए? Last blank में बताइए. What do you put in the last blank?
राइट, सो लास्ट वाले ब्लैंक में हैज बीन डैश एग्जैजरेटेड, क्या होना चाहिए? हार्डली एग्जैजरेटेड, it should be greatly. The correct answer should be A. ये तो रिबेलियन तो नहीं हो जाते, टीनेज पूरे विद्रोही तो नहीं हो जाते। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस स्टाइनबर्ग, ऐसे जो लोग कहते हैं कि इतना ये टीनेज में इतना विरोध विद्रोह वगैरह करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन है, जितना होता नहीं है उससे ज़्यादा लोग एग्जैजरेट करते हैं। सो इट हैज़ बीन ग्रेटली एग्जैजरेटेड। द करेक्ट आंसर इज A. A is absolutely right. चलते हैं अगले पैसेज के तरफ, ध्यान से पढ़ो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड देन वील मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। Read and understand, that's what is important. ओके, पढ़ लिया सबने? हैव यू रेड द पैराग्राफ एवरीवन? ओके, it says the four taps approach has helped Singapore to dash water sustainable. The first tap is source water or water dash far. The second tap is water from local catchment. Most of the cities dash as a catchment to collect rainwater. The third tap is desalination. Water from the sea is dash and supplied to the city. The fourth tap is dash wastewater, or as Singapore calls it, new water. Wastewater is treated to such high dash that it can be drunk. Pretty simple, not very difficult. Now, पहला blank, the four taps approach has helped Singapore to dash water sustainable. कई लोगों ने already answer दे दिया. Adapt water sustainable नहीं, it will be become. The four taps approach has helped Singapore to become water sustainable. फोर टैप्स अप्रोच ने सिंगापुर को वाटर सस्टेनेबल बनने में मदद किया है. सो हैज हेल्प्ड सिंगापुर टू बिकम वाटर सस्टेनेबल. द फर्स्ट टैप, okay, the first tap is sourced water or water dash far. The first tap is sourced water or water dash far, from, on, in or about. क्या होना चाहिए बताओ? Right, the correct answer is water from. Pretty simple, water from far, जो दूर से आता है उस पानी की बात कर रहे हैं. आगे देखते हैं. The second tap is water from a local catchment. The second tap is water from a local catchment. Most of the water is dash as a catchment. Sorry, most of the city is dash as a catchment to collect rainwater. Aimed, premeditated, calculated or designed. Simple one. Most of the city is designed. Very good. Most of the city is designed as a catchment to collect rainwater.
शहर में ज़्यादातर जगह को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो रेन वाटर को कलेक्ट कर सके। एंड नेक्स्ट इज द थर्ड टैप, कहाँ गया? द थर्ड टैप इज desalination. The third tap is desalination. Water from the sea is dashed and supplied to the city. Easy one. Already आपको keyword दिया हुआ है. Water is dashed from the sea. Sorry, water from the sea is dashed. Desalinated. D is absolutely right. Desalinated, supplied to the city. The fourth tap is dash wastewater. The fourth tap is dash wastewater. Smoked, canned, salted or treated. क्या होना चाहिए बताओ? Very good. Treated wastewater, or as Singapore calls it, new water. Wastewater is treated to such high dash. Wastewater जो है, even sewage water को इस high dash तक treat किया जाता है that it can be drunk. Wastewater is treated to such high values, morals, ethics or standards. Just imagine the technology, किस लेवल तक उसको ट्रीट किया जाता होगा, उस गंदे पानी को, ऑलमोस्ट नाले के पानी को, जिसे आप पी भी सकते हो. स्टैंडर्ड्स, डी इज एब्सोल्युटली राइट. वेस्ट वाटर इज सच ट्रीटेड टू सच हाई स्टैंडर्ड दैट कैन बी ड्रंक. तो इतना समझ गए कि सिंगापुर में ये 4 टैप्स अप्रोच है. और कितना सही है सोचो. कभी हार्डली विल दे हैव वाटर शॉर्टेज अगर ऐसे ही सस्टेन करते रहे तो. सो स्टैंडर्ड्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब चलते हैं पैसेज पे. डायरेक्शंस क्या कह रहा है? इन दिस सेक्शन यू हैव अ शॉर्ट पैसेज. एक ही पैसेज करेंगे आज. अ शॉर्ट पैसेज. आफ्टर द पैसेज यू विल फाइंड सम आइटम्स बेस्ड ऑन इट. First, read the passage and answer the items based on it. You are required to select your answers based on the contents of the passage and opinion of the author only. So, start reading. पढ़ना शुरू करिए सभी लोग. मैं नहीं पढ़ूंगा आपके लिए. एग्जाम्स में ऑब्वियसली मैं रहूंगा नहीं पढ़ने के लिए. So, you should read it on your own and then let me know. और एक पैराग्राफ है, एक बार पढ़ लो, उसके बाद I will change the slide. Read this paragraph. पढ़ लिया सबने?
Okay, it says not all agricultural societies become civilizations, but no civilization can become one without passing through the stage of agriculture. ओके, समझ गए यहाँ तक कि सारे एग्रीकल्चरल सोसाइटी सिविलाइजेशंस नहीं बन जाते, लेकिन सभी सिविलाइजेशन, एक भी सिविलाइजेशन नहीं बनता एग्रीकल्चर के स्टेज से पास किए बिना, जिसका मतलब इनडायरेक्टली हर एक सिविलाइजेशन को एग्रीकल्चर का स्टेज पास करना पड़ता है. दिस इज बिकॉज एट सम स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, as productivity improves, not all people would need to be engaged in producing or procuring food. जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होता है, सभी लोगों को खाना या एग्रीकल्चर में घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. A significant number of people could be freed up to pursue other activities such as building walls or monuments for new cities, making new tools, weapons and jewelry, organizing long distance trade, creating new artistic masterpieces, coming up with new inventions, keeping accounts, and perhaps constructing new public infrastructure such as irrigation canals that further improve the productivity of agriculture, thus realizing even more people to do new things. So जैसे जैसे लोग फ्री होते हैं, वो अलग अलग कामों को करने के लिए भेज दिए जाते हैं. That's what it means. अगला पैराग्राफ, इसे भी पढ़िए. Read it 2 minutes. फटाफट इस पैराग्राफ को पढ़ो, then we'll move on to the questions. And done? Okay. It says this can happen, of course, only if a society that has transitioned into high productivity agriculture has also, at some stage in its evolution, found a way to channel the bonanza of free time into other work fruitfully. In the ancient world, this often involved creating new ideologies and new hierarchies or power structures to coerce or otherwise convince large groups of people to devote their time to new tasks for very little reward. ओके, सो ऐसे टाइम में, पुराने ज़माने में फ्री टाइम में लोग और भी नए आइडियोलॉजीज, हायरार्कीज, पावर स्ट्रक्चर्स बनाते थे. एक तरह से एक सिस्टम बनाते थे कि और भी ज़्यादा काम, वैरायटी ऑफ वर्क हो सके, लेकिन रिवॉर्ड बहुत कम मिला करता था. कोर्स का मतलब होता है एक तरह से मनाना, कन्विंस करना, फोर्स करना, दैट इज कोर्स. Now question number 1, it says which of the following statements is true according to the author? ऑथर के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है? Agriculture has always been part of all civilizations. Not all civilizations have undergone the processes of agriculture. Agriculture gave birth to new civilizations, or communities discontinued agriculture to become civilizations. Which of these is true according to the passage? कोई चीज जो पैसेज में क्लियरली दिया गया है. Right, the correct answer is A. Agriculture has always been part of all civilizations. पहले लाइन में ही लिखा है कि सारे एग्रीकल्चरल सोसाइटी सिविलाइजेशंस नहीं बन जाते, लेकिन एक भी सिविलाइजेशन ऐसा नहीं होगा जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी कभी ना कभी नहीं था. सो दैट्स क्लियरली मेंशन्ड.
अगला क्वेश्चन कह रहा है अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल वर सेंट आउट टू कैरी आउट अदर वर्क फ्रॉम एग्रीकल्चर बिकॉज कई लोगों को एग्रीकल्चर से दूसरे दूसरे कामों में भेजा जाता था, क्यों? बिकॉज देयर वर इनसफिशिएंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, because people were needed to build monuments, weapons, jewelry, etc., because there were sufficient agricultural products, or this enabled the development of civilizations. तो सवाल को ध्यान से पढ़िए कि कई लोगों को एग्रीकल्चर छोड़ के अलग अलग कामों में क्यों भेज दिया गया, दैट्स द क्वेश्चन. दूसरे कामों में क्यों भेज दिया गया, दैट्स द क्वेश्चन. ओके, देयर वर सफिशिएंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वेरी गुड. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स काफ़ी थे, जिसका मतलब काफ़ी लोग भी थे, मैन पावर भी थे, एंड देयर वर सफिशिएंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एंड दैट्स द रीजन पीपल वर सेंट आउट. अगर इनसफिशिएंट होते तो लोगों को भेजना नहीं चाहिए था, तो इसलिए ये गलत है. पीपल वर नीडेड, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, लोगों की ज़रूरत नहीं थी, लोग शौक से जाया करते थे. डी कह रहा है दिस एनेबल्ड, आप तो ये रिजल्ट बता रहे हो, बट यहाँ पे कारण पूछ रहा है कि क्यों लोगों को भेजा गया था. ये नहीं पूछा गया कि लोगों को भेजने से क्या हुआ. सो द करेक्ट आंसर इज देयर वर सफिशिएंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, दैट्स द रीजन a significant number of people were sent out to do other work. अगला क्वेश्चन क्या रहा है, what kind of agricultural based societies would emerge as civilizations? So societies which achieved high productivity in agriculture had the opportunity to find time for other work. Societies which dependent on agriculture completely moved to other work so as to move to many places. Societies which transitioned from one stage of agriculture to another. Societies which could not do agriculture for lack of resources moved to other work. So, what kind of agriculture-based societies would emerge as civilizations? क्या होना चाहिए बताओ? The correct answer is indeed A. Societies which achieved high productivity in agriculture had the opportunity to find time for other work. Agriculture में जो high productivity इनका हो जाता था, वो दूसरे कामों में भी, वो दूसरे चीज़ों में वो समय दे पाते थे. Next, people as groups were convinced to do new work through reward, force, community persuasions, ideologies, hierarchies, power structures, excessive agricultural products or very high rewards. कैसे कन्विंस किया जाता था लोगों को नया काम करने के लिए, दैट्स द क्वेश्चन. Okay, the correct answer is through ideologies, hierarchies, and power structures. That's clearly mentioned in the passage. B is absolutely right. Ideologies, hierarchies, and power structures. Which word in the passage means changeover? Transition, channel, coerce, or hierarchies? Changeover. कौन से word को changeover का synonym आप दे सकते हो? Changeover means transitioned. A is absolutely right. Channel आप जानते हो, coerce मतलब force करना, hierarchies मतलब different level of power structures, that is a hierarchy. So ये तमाम questions थे आज के लिए. उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा. टेस्ट बुक पास का आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन में भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है गाइस, इसका फ़ायदा उठाइए. ओके, मेक यूज़ ऑफ दिस डिस्काउंट्स दैट्स एक्चुअली गोइंग ऑन. प्रैक्टिस के बिना आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अधूरे हैं जो भी सीख रहे हो आप. यू कैन यूज़ दिस कोड विच इज़ जोश पास टू अवेल एडिशनल 10% डिस्काउंट
on the Testbook pass. Okay, so use this code and buy now. प्रैक्टिस करिए ज़्यादा ज़्यादा. डाउट्स क्वेरीज होगा तो यूट्यूब और मेरे जो ऐप के सेशंस हैं उसमें आइए. 7:30 बजे आपके ऐप में यस मॉक टेस्ट होगा. ज़रूर जुड़िएगा. 7:30 एवरीवन, द सेशन विल बी देयर. जो लोग इंस्टॉल नहीं किए हो ऐप को, प्लीज़ इंस्टॉल इट. लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो इस सेशन में इतना ही था. Okay, to like the session, if you liked it, subscribe to the channel, click on the bell icon for notifications. मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में. तब तक के लिए गुड बाय, stay safe, take care everyone, bye bye.